It is happening all the time now. As Ramazan proceeds, a huge rush, sometimes ending in stampedes, at food distribution sites is a common sight. In Karachi, 12 people, women and children, died recently, as they tried to get their hands on sacks of free wheat flour. The latter has become so expensive that for many people queuing up at distribution points is the only way to obtain this most essential dietary staple. Similar stampedes during the ongoing month of fasting have occurred elsewhere in the country, too, as in Peshawar, once again at a food distribution site. Such is the curse of hunger, and the desire to get some sustenance for one's family is so pressing that even endangering one's life in the quest for wheat flour seems a necessary risk to take. The numbers continue to tell a sad story. According to the Consumer Price Index, the prices of commodities were up 35% in March from 1 year earlier, the highest since 1965. It was also reported that the price of transportation rose by 50%. In the background of the mad rush is Pakistan's ongoing drama with the International Monetary Fund. Pakistan's need for the fund to release a tranche of $1 billion is dire. Without this amount, Pakistan could default, and the consequences of that would be the country being submerged in circumstances even worse than the ones that are unfolding on the streets nowadays. When a country defaults, it finds itself constrained in the international market because creditors have no confidence in getting paid. If the poor are lining up for sacks of flour and cooking oil now, the post-default future would mean lines for everything. Patients would be dying in hospitals as there would be a shortage of life-saving medicine. Drugs are already in short supply, with pharmaceuticals sounding a grim warning, leaving people to the vagaries of the black market to try and obtain anything at all. It is notable that the majority of the dead in stampedes have been women. It is women who have to contend with the hunger of children and witness empty pots over stoves that no longer work because of the gas crisis. In the month of Ramazan, hunger and thirst during the day are part of a period of refocusing on the spiritual through the hardship of foregoing sustenance. Imagine then, the acute pain and suffering of an endless fast where the absence of food means that the fast is perpetual, the hunger constant. They say that there is nothing more painful than the crushing agony of hunger cramps. It is their grueling endurance that sent many mothers in the recent Karachi stampede to their death, mothers who died rather than face the disappointed eyes of their hungry children. Mothers dying rather than disappointing their children is a particular and new depth for human depravity. For their part, the police set about arresting people the next day, blaming a factory manager and some business owners for what happened. It is impossible not to wonder whether this will ever end. Clearly, more needs to be done. The giving of food is common in Ramazan. Business owners, factory operators, and other people with money always organize the distribution of rations during the month. But there has always been an element of dehumanization in these moments, the benevolent wealthy passing boxes or bags to the assembled poor, the aching want of one highlighting the magnanimity of the other. Being seen as wanting, as poor and as desperate seems crucial to getting help. The shame of poverty is utilized to underscore the arrogance of wealth. Even those concerns seem pointless this year when there are so many poor, so many wanting that the optics of want and generosity seem lost. In several interviews taken at one site, it was obvious that the hungry were not simply the desperate and very poor but also educated, even middle-class, folk, people with jobs in textile mills or other workplaces that have shut down because the owners cannot import the materials needed. These people who have suddenly become poor can no longer afford the sacks of flour that cost more than 1,000 rupees for a 10-kilogram bag. News of the closure of even more factories means that the lines will be even longer this month. Last week, it was announced that practically all the country's mobile assembling units have shut down. The people that work at these factories have been given half their salaries and told that they will be contacted when production resumes. The problems faced by the mobile assemblers are similar to those that textile mill owners confront. The owners are unable to obtain letters of credit from banks that guarantee that the amount will be paid. Without those letters, it is impossible to keep the lines of production going. It is impossible not to wonder whether this will ever end. Clearly, more needs to be done.
The amount of food being distributed at these sites should be increased so that everyone gathered there is able to get something. This should hold true for government distribution sites as well. Governments, that are generally bad at managing any crisis of this sort, can enlist the help of private charity groups that are generally more efficient and can make distribution more orderly. Without a superhuman and unprecedented effort by both, people will die of hunger in the month when charity and fellow feeling is supposed to be the focus of everyone fasting to earn blessings. Those who plan to distribute food need to ensure that they have enough supplies to meet the increased need and to control the number of people who are permitted to line up. Catastrophes like the ones that took so many lives last week can be avoided with foresight and some sincere consciousness of the acute want faced by so many people this Ramadan. The writer is an attorney teaching constitutional law and political philosophy. Published in Dawn, April 5, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. ये अब हर वक्त हो रहा है। जैसे जैसे रमजान शुरू होता है, खाने पीने की अशिया की तकसीम के मकामात पर एक बहुत बड़ा रश, जो कभी कभी भगदड़ में खत्म हो जाता है, एक आम मंजर है। हाल ही में कराची में मुफ्त आटे की बोरियों पर हाथ डालने की कोशिश में ख्वातीन और बच्चों समेत 12 अफराद जाँ बहक हो गए। मुअख्खर जिक्र इतना महंगा हो गया है कि बहुत से लोगों के लिए तकसीम के मकामात पर कतार में खड़े होना इस सबसे ज़रूरी ग़िज़ा को हासिल करने का वाहिद तरीका है। रवाना रोज़ा के दौरान मुल्क के दीगर हिस्सों में भी भगदड़ मचने के वाक़यात पेश आए हैं, जैसा कि पेशावर में एक बार फिर खाने की तकसीम के मकाम पर हुआ है। भूख की लानत ऐसी है और अपने घर वालों के लिए कुछ रिस्क हासिल करने की ख्वाहिश इतनी शदीद है कि गंदुम के आटे की तलाश में अपनी जान को खतरे में डालना भी एक ज़रूरी खतरा लगता है। अदाद और शुमार एक अफसोसनाक कहानी बयान करते रहते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मुताबिक मार्च में अजनास की कीमतों में एक साल पहले के मुकाबले में 35% इजाफा हुआ, जो 1965 के बाद सबसे ज़्यादा है। ये भी बताया गया कि नकलो हमल की कीमतों में 50% इजाफा हुआ। इस पागल रश के पस मंजर में पाकिस्तान का बैन अल-अक़वामी मालियाती फंड के साथ जारी ड्रामा है। पाकिस्तान को इस फंड की $1 अरब की किस्त जारी करने की अशद ज़रूरत है। इस रकम के बगैर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो सकता है और उसका नतीजा ये होगा कि मुल्क उन हालात से भी बदतर हालात में डूब जाएगा जो आजकल सड़कों पर नमूदार हो रहे हैं। जब कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट करता है तो वो खुद को बैन अल-अक़वामी मार्केट में महदूद पाता है, क्योंकि कर्ज दहिंदगान को अदायगी करने में कोई एतमाद नहीं होता है। अगर गरीब लोग अब आटे और खाना पकाने के तेल की बोरियों के लिए कतार में खड़े हैं, तो डिफ़ॉल्ट के बाद मुस्तक़बिल का मतलब हर चीज़ के लिए लाइनें होंगी। हस्पतालों में मरीज मर रहे होंगे क्योंकि जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की किल्लत हो जाएगी। अद्वियात की पहले से ही किल्लत है। अद्वियात की फ्राहमी एक संगीन इंतबा है, जिससे लोगों को कुछ भी हासिल करने की कोशिश करने के लिए ब्लैक मार्केट की बेकायदगियों का सामना करना पड़ेगा। ये बात काबिल जिक्र है कि भगदड़ में मरने वालों में अक्सरियत ख्वातीन की है। ये वो ख्वातीन हैं जिन्हें बच्चों की भूख का सामना करना पड़ता है और चूल्हे पर खाली बर्तन देखने पड़ते हैं, जो गैस बहरान की वजह से अब काम नहीं करते। रमज़ान के महीने में दिन के वक्त भूख और प्यास रिस्क की तंगी के जरिए रूहानियत पर तवज्जो मरकूज करने के दौर का हिस्सा है। फिर तसव्वुर करें कि एक ना खत्म होने वाले रोज़े का शदीद दर्द और तकलीफ, जहां खाने की अदम मौजूदगी का मतलब यह है कि रोज़ा दायमी है, भूख मुस्तकिल है। उनका कहना है कि भूख की अजियत से ज्यादा तकलीफ दे कुछ नहीं है। ये उनकी सख्त बर्दाश्त है जिसने हालिया कराची भगदड़ में बहुत सी माओं को मौत के मुंह में धकेल दिया। माएं जो अपने भूखे बच्चों की मायूस आंखों का सामना करने के बजाय मर गई। माओं का अपने बच्चों को मायूस करने के बजाय मर जाना इंसानी की एक खास और नई गहराई है। इनकी तरफ से पुलिस ने अगले दिन लोगों को गिरफ्तार करने का फैसला किया। जो कुछ हुआ इसके लिए फैक्ट्री मैनेजर और कुछ कारोबारी मालिकान को मोरिद इल्जाम ठहराया। ये सोचना नामुमकिन नहीं है कि आया ये कभी खत्म होगा। वाज़े तौर पर मजीद काम करने की जरूरत है। रमजान में खाना देना आम बात है। कारोबारी मालिकान, फैक्ट्री ऑपरेटर्स और पैसे के साथ दीगर लोग हमेशा महीने के दौरान राशन की तकसीम का इंतजाम करते हैं।
लेकिन इन लम्हात में हमेशा गैर इंसानी सलूक का उनसर रहा है। खैरखा दौलतमंद जमा होने वाले गरीबों को डब्बे अबेग मुंतकिल करते हैं। एक की तकलीफ दे ज़रूरत दूसरे की अजमत को उजागर करती है। मदद हासिल करने के लिए ज़रूरतमंद, गरीब और मायूस के तौर पर देखा जाना बहुत ज़रूरी लगता है। गुर्बत की शर्मिंदगी को दौलत के गुरूर को उजागर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि ये खदशात भी इस साल बेमानी नजर आते हैं जब बहुत सारे गरीब हैं। इतने सारे लोग चाहते हैं कि ज़रूरत और सखावत की झलक खो गई है। एक साइट पर लिए गए कई इंटरव्यूज में यह बात वाज़ेह थी कि भूखे लोग सिर्फ मायूस और इंतहाई गरीब ही नहीं थे बल्कि तालीम याफ्ता, यहाँ तक कि मुतवस्सित तबके के लोग भी थे जिनके पास टेक्सटाइल मिलों या दीगर काम की जगहों पर मुलाजमतें थीं और वो बंद हो चुके थे क्योंकि मालिकान मतलूबा सामान दरामद नहीं कर सकते थे। ये लोग जो अचानक गरीब हो गए हैं वो अब फर्श की बोरियां बर्दाश्त नहीं कर सकते जिनकी कीमत 10 किलोग्राम के थैले के लिए 1000 रुपए से ज्यादा है। मजीद फैक्ट्रियों की बंदिश की खबरों का मतलब है कि इस लाइनें और भी लंबी होंगी। गुज़िश्ता हफ्ते ये ऐलान किया गया था कि मुल्क के तकरीबन तमाम मोबाइल असेंबलिंग यूनिट्स बंद हो चुके हैं। इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों को उनकी आधी तनख्वाह दी गई है और बताया गया है कि पैदावार दोबारा शुरू होने पर उनसे राब्ता किया जाएगा। मोबाइल असेंबलर्स को दरपेश मसाइल टेक्सटाइल मिल्स मालिकान को दरपेश मसाइल से मिलते जुलते हैं। मालिकान बैंकों से लीटर ऑफ क्रेडिट हासिल करने से कासिर हैं जो इस बात की जमानत देते हैं कि रकम अदा की जाएगी। इन खतूत के बगैर पैदावार की लाइनों को जारी रखना नामुमकिन है। ये सोचना नामुमकिन नहीं है कि आया ये कभी खत्म होगा। वाज़ेह तौर पर मजीद काम करने की ज़रूरत है। इन मकामात पर तकसीम किए जाने वाले खाने की मिकदार में इजाफा किया जाए ताकि वहां जमा होने वाले हर शख्स को कुछ ना कुछ मिल सके। ये सरकारी डिस्ट्रीब्यूशन साइट्स के लिए भी दुरुस्त होना चाहिए। हुकूमतें, जो आमतौर पर इस किस्म के किसी भी बहरान से निमटने में बुरी होती हैं, निजी खैराती गिरोहों की मदद हासिल कर सकती हैं जो आमतौर पर ज्यादा मुअस्सर हैं और तकसीम को ज्यादा मुनज़्ज़म बना सकते हैं। इन दोनों की गैर मामूली और गैर मामूली कोशिश के बगैर लोग इस महीने में भूख से मर जाएंगे जब सदका और खैरात और इंसान दोस्ती हर रोजे की तवज्जो का मरकज समझी जाती है ताकि बरकतें हासिल की जा सकी। जो लोग खुराक तकसीम करने का इरादा रखते हैं उन्हें इस बात को यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि उनके पास बढ़ती हुई ज़रूरत को पूरा करने के लिए काफ़ी रसद है और उन लोगों की तादाद को कंट्रोल करने के लिए जिनको कतार में खड़े होने की इजाज़त है। गुज़िश्ता हफ्ते बहुत सी जाने लेने वाली तबाहकारियों जैसी तबाहकारियों से दूर अंदेशी और इस रमज़ान में बहुत से लोगों को दरपेश शदीद ज़रूरत के बारे में कुछ मुखलिसाना शऊर के साथ बचा जा सकता है। मज़मून निगार आईनी कानून और सियासी फ़लसफ़े की तालीम देने वाले वकील हैं। अख़ज़ शुदा बतारीख़ 5 अप्रैल 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.